हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पढ़े पे जाऊँ नाउन. नाउन मीन्स विशेष्य व संज्ञा. Definition: a noun is a word used as the name of a person, place or things. ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ତୁ ସ୍ଥାନର ନାମକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ତାହାକୁ ନାଉନ୍ କୁହାଯାଏ. ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍: ରାମ, ପୁରୀ, ଟ୍ରୁଥ୍, ଚେୟାର, କପ୍, ଟେବୁଲ୍ ଏଟସେଟ୍ରା. Name of a person, name of a place, name of a thing, name of a girl, name of a boy, name of a bird, name of a chair, name of a table, etc. How to know a noun? Noun को हमें किपरि चिन्हिबा? What, who, which, whose, whom, etc. किए, कौन, किपरि, केमिति. That's it. Example: Gita reads a book. Gita means who? A book means कम पढ़ुची. बुक एटी गीता होची नाउन, ए बुक गोटे नाउन. देन जानिबा किन्स ऑफ ए नाउन. नाउन केते प्रकार रो हेइथाय. फर्स्ट जानिबा कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक विशेष्य. इट इज ए नेम गिवन टू एवरी पर्सन ऑफ थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और kin that called as common noun. That's class noun. मीन्स गोटिए जातिर प्रत्येक पदार्थर नाम को कॉमन नाउन कुहा जाय. एग्जाम्पल देखिबा मैन, रिवर, काउ, बुक एटसेट्रा. रिवर नदी जातिर प्रत्येक नदी को बुझाए. मैन मनुष्य जातिर प्रत्येक मनुष्य को बुझाए. काउ गाय जातिर प्रत्येक गाय को बुझाए. बुक पुस्तक जातिर प्रत्येक पुस्तक को बुझाए. देन जानिबा प्रॉपर नाउन, नामवाचक विशेष्य. डिटेल्स ऑफ ए कॉमन नाउन आर सिग्निफाइड बाय प्रॉपर नाउन. देन कैपिटल नाउन. जेकोनोसी व्यक्ति, वस्तु बा स्थानर नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाए. एग्जाम्पल: राम, ग्रामर, कटक, महानदी एटसेट्रा. राम मीन्स गोटे मनुष्यर नाम. ग्रामर मीन्स गोटे विषय को बुझाए. कटक गोटे निर्दिष्ट स्थान को बुझाए. महानदी गोटे रिवर को बुझाए, मीन्स गोटे नदी को बुझाए. देन जानिबा हमें कलेक्टिव नाउन, समष्टिवाचक विशेष्य. इट इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स. जेकोनोसी नाउन केते गुडे व्यक्ति बा वस्तु रो दल बा समष्टि को बुझाए ताहाको कलेक्टिव नाउन कहा जाय बा समष्टिवाचक विशेष्य कहा जाय. एग्जाम्पल: क्लास, लाइब्रेरी, फ्लीट एटसेट्रा. क्लास होची छात्र छात्री माने थिबा गोटे दल बा समष्टि को बुझाए. लाइब्रेरी गोटे पुस्तकालय समष्टि को बुझाए. फ्लीट केते गुडे जहाजर समष्टि को बुझाए. देन जानिबा हमें मटेरियल नाउन बा वस्तुवाचक विशेष्य. इट इज ए सब्सटेंस, ए मटेरियल और an ingredient we can see and touch which is used for making things. Means जो पदार्थ रो नाम तार प्रत्येक अंश, प्रत्येक अंशर नाम को बुझाए. से पदार्थ को हमें मटेरियल नाउन कहू. देन एग्जाम्पल देखिबा: पेपर, गोल्ड, चक, कोट एटसेट्रा. पेपर मीन्स गोटे कागज बा तार प्रत्येक अंश, मीन्स छिंडा कागज बा खंड कागज से सब को मटेरियल नाउन कहा जाय. देन गोल्ड, गोल्ड माने गोटे सोना बा तार गोटे छोट क्षुद्र पर्सन भी थाए. देन ताको भी हमें मटेरियल नाउन कहबा. चक मीन गोटे चक हो बा तार पीस ऑफ चक हो ताको मटेरियल नाउन बुझा जाए. देन जानिबा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बा गुण बा क्रियावाचक विशेष्य. इट इज द नेम ऑफ ए फीलिंग्स, क्वालिटी और स्टेट. कौनसी गुण, कार्य एंड अवस्थार नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाए. बा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होची कौनसी समय गुण, क्रिया, अवस्था को बुझे से गुण बा अवस्था विशेष पदार्थ को बुझाए ताको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाए. Feelings means love, fear, hate, angry, respect, pleasure, etc. Quality which is strength, peace, innocence, judgment, obedience, beauty, etc. State: awareness, sadness, birth, death, etc.
Then जानिबा countable noun. Countable noun का कहछि countable noun can be counted. जो noun को आमे गणी परिबा ताको countable noun कहछि. They have singular and plural form. Example boy, boys, girl, girls. Means आमे हमको गणी परिबा ताको countable noun कहबा. We can use numbers such as 1, 2, 3, etc. माने सब को हमें गणी परुची. Then before countable nouns. जो सब जिनस को हमें गणी परिबा ताको countable noun कहजे. We can use indefinite article a and before countable nouns. Example a cow, an umbrella. Then we can use quantifiers such as some, many, few, a few, a lot of before countable nouns. इस सब को means countable noun याको कहजे जो noun को means वस्तु को हमें गणी पारुथबा ताको noun कहजे. Second जानिबा uncountable noun. Uncountable noun cannot be counted. माने हमें जाको गणी पारुनी ताको uncountable noun कहजे. They did not have plural form. Example water, sugar, salt. इस को हमें गणी पारुनी then से होचे uncountable noun. We can't use definite article a and b for uncountable nouns. We can use quantifiers like some, much, little, lots of b for uncountable nouns. Then जो निर्दिष्ट noun को आमे गणी पारु नथिबा जो आर्टिकल हो कि क्वांटिफायर्स हो हम तक गणी पारु नथिबा ताको uncountable noun कहजे.